everyone. Good morning, guys. Good morning. I hope I'm clearly audible. आप लोग chat में लिख सकते हैं if I'm clearly audible. We'll be starting a session in next few minutes. Clear audio, yes. Thanks for the confirmation. We'll just wait for our expert Dev sir to join in, and then we are good to go. Good morning. Dev sir is here. Let me just add him to the panel. Do you give option trading as well? We do give, but in the afternoon session, not right now. Right now, we'll focus more on stocks. Dev sir, I've sent you a request. You can join in the panel. Kinko Bulao, definitely we'll ask him to join us as soon as possible in one of his session. I guess we'll be seeing him in Thursday morning and then in afternoon on Friday. Good morning, Dev sir. I hope you can hear me. Good morning, Rakesh ji. Good morning. Dev sir, can you hear me? You're on mute. Dev sir, we can't see your screen. Can you please leave and join again? Good morning, Jigyasa ji. Yes, we can see your screen now, but we can't see you. आज मार्केट फॉल करेगा या ऊपर जाएगा? इमरान जी जरूर बताएंगे हम आपको इसके बारे में. Hi Anuj, hope I'm audible. Yes, Dev sir, you are clearly visible, audible. We can see your screen as well, and we can start the session. Probably you can start with the update on the BTST, and then we can move on to the market. Yeah, sure. So JK paper, we saw a 0.23, 0.3% gap up opening. I hope तभी सबने exit कर लिया हो क्योंकि अभी फिलहाल it is down by 1.69, 1.5%. Talking about Concor also 1% upside. Hope आपने 1% upside book किया हो. नहीं किया है तो अभी 0.30% upside पे अभी के लिए book कर सकते हैं. दूसरा, I'll move forward to the stocks in focus. We can add GRSC in our watch list for now. We can add Cochin Shipyard in our watch list for now. And we can add Boro Renewables in our watch list for now. About the market, saw gap up opening, currently in Sensex 0.07% on the upside. And let's move forward to the levels right now. So the levels for the day are Nifty support at 24,400, then at 24,300, while upside at 24,600, then at 24,700. Talking about Bank Nifty, support at 52,222, then at 52,000, upside at 52,750, then at 53,000. Fin Nifty support at 23,500, upside at 23,750, then at 23,850. So these are the levels. Now moving forward to the market outlook, right now we see Nifty and Bank Nifty stuck in a small range. We are still waiting for a breakout.
though we can be on the buying side. अगर आप options करना ही चाहते हो तो buy on dips strategy अभी apply कर सकते हैं. Then I am also tracking few stocks for intraday cash. So intraday cash में अगर बात करें Zenser tag भी अगर आप watch list में add करो तो आपको अच्छा पड़ेगा क्योंकि उसमें स्टॉक गेन हो रहा है आफ्टर क्वार्टर वन रिजल्ट मार्केट को लेके टॉकिंग अबाउट फ्यू इवेंट्स टुडे आपको पता ही है 11 बजे our finance minister will be presenting the budget, so all eyes on it, and we are keenly waiting, we are keenly watching. There was some internet issue. I've asked him to join us again. So as soon as he's back, we'll start the session once again. Meanwhile, we have already shared stocks on our watch list. I hope I am clearly audible. Yeah. Sorry, I dropped, I guess. Is it okay now? Am I visible? Yes, sir, you are clearly audible now. Yeah. Sharing the chart. So, can you just let me know the last thing which you heard so that I can continue from there? Sir, I guess you were adding one more stock to the watch list. Yeah, it is Sensor Tech because after the quarter one results, we have seen some spike in the price of Sensor Tech. So you can add it in watch list. Talking about the few events, we have budget at 11 a.m. So we are keenly monitoring about the budget part, and we'll be sharing the updates in the 2:30 stream as well for the budget. And we also have a Chandan sir's session, if I'm not wrong, right, regarding the budget, decoding budget. Till then, let's move on to the queries until we finalize our stock for the day. Guys, just to inform Chandan, the session is tomorrow, not today, tomorrow at 4 p.m. Okay. So guys, feel free to drop your queries right now. We'll be happy to take them up. We have given an update on our BTST. So I guess the first which we can take is Zomato. Yeah. So Zomato seems strong. 220 levels हमने बहुत पहले बताया था जब 180 चल रहा था. So अभी almost 220 आ चुका है. It is on the move. We are expecting about 250 levels in coming times, and नीचे की side पे support will be at around 190. HDFC. HDFC Bank seems strong till 1700 levels. Upside and downside support will be at around 1550 in coming times. Indian Cement bought at 345. What was the stock again? Indian Cement bought at 345. ठीक है, नीचे की साइड पे अभी फिलहाल इसका सपोर्ट होगा एट अराउंड 340 एंड ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस एट 360. सो एक बार 360 क्रॉस करेगा तो यू कैन सी फ्रेशर लेवल्स इन दिस. सर MRPL.
ऊपर के साइड पे इट विल बी अराउंड 222 एंड नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी एट अराउंड 195 लेवल्स. Sir, Z Media buying at 15. Buying at 15 Z Media. ठीक है. अभी फिलहाल रेजिस्टेंस एट अराउंड 1350 14 एंड नीचे की साइड पे स्टॉप लॉस विल बी अराउंड और सपोर्ट यू माइट से एट अराउंड 12 और 1190. Sir, Gale bought at 230. Gale bought at what rate? 230, right? Yes. So the support will be at around 205 or 207 and upside resistance at 240. Sir, should we buy GTL stock? Which stock? GTL. Looking at the particular things, I don't think there are volumes in the stock, so can be avoidable for now. Sir, NHPC buy करना है CMP, your opinion? So NHPC अगर बात करूं थोड़ा बहुत नीचे की साइड पे आया है आज एंड अगर लॉन्गर पीरियड की बात करें तो भी काफी मतलब अगर आप देखें तो 116 से 106 आ चुका है. नीचे की साइड पे 100 का सपोर्ट है. मैं कहूंगा एक 100 तक का लेवल्स तक आप वेट करिए. 100 पे आप एक बार फ्रेश बाइंग कर सकते हो और ऊपर की साइड पे फिर 115 के आसपास से छोड़ सकते हो. Sir, OCCL bought at 357. ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस विल बी एट अराउंड 400 एंड नीचे की साइड पे विल बी अराउंड 325. Sir, ITC bought at 339. देखिए आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है, एक पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा पोर्टफोलियो स्टॉक है. अगर आप 339 से होल्ड कर रहे हैं आप काफी अच्छे गेन्स में मैं कहूंगा अभी भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं. आप अपना स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 440 450 मेंटेन करिए. बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं तो कहूंगा कि आप होल्ड कर सकते हैं इसको लंबे समय के लिए. Sir, NBCC buying 194, 1000 quantity. NBCC same like RVNL has been receiving orders quite frequently. So इनका order book अच्छा है. And talking about the technicals, technically ही अभी फिलहाल strong लग रहा है. मैं कहूंगा अभी ऊपर की साइड पे it will be around 200 एक बार क्रॉस करता है तो आपको एक 220 का लेवल दिख सकता है. But it needs to cross 200 mark for it. And नीचे की साइड पे support will be at around 170. Adani Ports. ठीक है. we can see move towards 1600 and नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी एट अराउंड 1350 1300. 1300 का आप सपोर्ट लेके चल सकते हैं इसमें. Sir, intraday trade for the day.
Intraday trade for the day, I'm still figuring out. जाएंगे नहीं वो दिए बिना. वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं मैंने भी स्टॉक्स, बट डोंट वरी, हम पक्का देख के जाएंगे. आपने देखा होगा, जस्ट एक मार्केट अपडेट शेयर कर देता हूँ. वी सॉ गैप अप ओपनिंग, और जब हम बात कर रहे थे लेवल्स की, तो निफ्टी वाज अराउंड आई गेस 0.09% ऑन द अपर साइड, करंटली एट अराउंड 0.04 ऑन द नेगेटिव साइड. सो हमने एक छोटा सा नेगेटिव डिप देखा है यहाँ पे. बैंक निफ्टी भी एक 50 पॉइंट से नेगेटिव में आ चुका है. सो मार्केट एक 100 पॉइंट की रैली में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, 50 पॉइंट्स इन द अपसाइड, 50 पॉइंट्स इन द डाउनसाइड, अराउंड एक 100 पॉइंट का मोमेंटम है फिलहाल के लिए. बट लेट्स सी, ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो व्हाट नेक्स्ट वी कैन सी. मेन जो हमारा मोमेंटम आएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर 11 when the budget starts, and there are a few changes, whether it be negative or positive, but let's see, main impact we'll be seeing on the market after 11. Sir, Bhel at 320. भेल 325 का रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड पे. अगर 325 ब्रेक करता है, इट बी अराउंड 350 के मूव के टुवर्ड्स बढ़ जाएगा ये. एंड नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी एट अराउंड 275. सर, डाबर 670 कॉल लिया है 4.10. Uh, 670 कॉल लिया है कितने पे? 4.10. 4.10 पे लिया है तो ऑलरेडी आपका काफी नीचे चल रहा है. आई वुड रेकमेंड कि वैसे भी 2 दिन में एक्सपायरी, आपको डिलीवरी फिर इसका नहीं देना पड़ेगा. तो स्टॉक ऑप्शन आई वुड रेकमेंड आप एग्जिट कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Sir, IRFC 100 quantity at 205. 205. ठीक है. ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस 220, नीचे की साइड पे सपोर्ट 190. इसके हिसाब से आप प्ले करिए अभी के लिए. रेलवे काउंटर पे वैसे भी आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है. सो ये लेवल्स को आप ध्यान में रखते हुए इसको होल्ड कर सकते हैं. Sir, data pattern. Your view on data pattern. And we have one more question. Data pattern bought at 3364. Okay. Give me a moment. We'll take data pattern. बस एक स्टॉक देख रहे हैं हम यहाँ पे. Sure. Guys, for intraday, we can initiate a trade in Swan Energy. जो renewable energy stocks I have been tracking, और I have seeing the fresh buying दिखाई दे रहा है यहाँ पे renewable energy stocks में. So Swan Energy पे आप फोकस कर सकते हैं. Swan Energy current market rate is 687. Please note it down. Current market rate भी note down करना अनुज. 687.20 current market rate. Stop loss will be around. Let's keep it. Give me a moment. Let me check the chart. Let's keep the stop loss at around 680. And target at around 700. So I hope you have noted down 687 current rate and stop loss at 680, and the
Target will be around 700. Ananya ji, we have already pinned the trade. Swan Energy, yes. Okay, till then we can still go back to the queries. We'll take few queries. Sir, Zentech 1420 buying. अच्छा, इसके पहले if I'm not wrong एक स्टॉक रह गया है. Data patterns, correct. Data patterns, yeah, I'm sorry. हाँ, so data patterns जो पूछ रहे थे, let me check. ठीक है, वीकली चार्ट पर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो पॉजिटिव नजर आ रहा है यहाँ से टुवर्ड्स 3300 मार्क, 3400 मार्क एंड रेजिस्टेंस काफी ऊपर 3500 कहूंगा मैं, और नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी एट अराउंड 2600. सर MTNL ले सकते हैं क्या करंट प्राइस में? Let me check. देखिए थोड़ा बहुत तो प्राइस नजर आ रहा है कि यहाँ पे काफी दिनों से एक अच्छा मोमेंटम मिला है. सो आई वुड रेकमेंड अगर फ्रेश एंट्री कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक के छोटा सा करेक्शन के बाद कर सकते हो. एक वन साइडेड रैली नजर आ रही है यहाँ पे, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डेली इट हैज गिवन अ गुड परफॉर्मेंस. 40 से लेके 45 से लेके ऊपर की साइड पे 83 तक चले गया, ऑलमोस्ट डबल अप. थोड़े टाइम में हो जाएगा डबल अप, ₹7 और ऊपर. सो आई वुड रेकमेंड कि अगर फ्रेश एंट्री कर रहे हो तो फिलहाल के लिए आपको MTNL जैसा कोई और स्टॉक ढूंढना है जो अभी ऐसा मूव देने वाला है. सो आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर एन अपडेट अनुज, जहां पे हमारा जो स्टॉक फॉर द डे ऑलरेडी इट इज ऑन द मूव. एक ₹3 ऑन द अपसाइड वी हैव इनिशिएटेड द बाय ऑन 687 if I'm not wrong, right? Yes. And it is at around 690.50 right now, 690.75, 691. So already for ₹3 to ₹4 in the on the upside. So it is already on the move. सर हमारा Zentech रह गया, I guess. We can go back to Zentech रह गया. Yes. We'll go back. Zentech near to its resistance. ऊपर की साइड पे एक 1450 का रेजिस्टेंस है. सो अगर फ्रेश बाय करना चाहते हो तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं. अगर 1450 ब्रेक करते हैं तो आपको फ्रेशर लेवल्स अराउंड 1500 1550 दिख सकते हैं इसमें. Sir, your view on TTML? Hello. Sir, TTML. T. T for tax. Sir, double T. Okay, it will be TTML if I'm not wrong. Yes, TTML. So I guess ये स्टॉक में लास्ट 2 दिन से या 3 दिन से ही कंटिन्यूसली मोमेंटम आ रहा है. वी हैव बीन ट्रैकिंग दिस टाटा टेली सर्विस थोड़े दिनों से, और काफी अच्छा मोमेंटम आ चुका है. सो थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहो तो. और अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है तो आई गेस इट विल बी इन प्रॉफिट. सो आप एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो. यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टिल अराउंड 95 to 100 लेवल्स. एक 99 पे आप अपना इसमें सपोर्ट मेंटेन करके चल सकते हो इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग दिस. Sir, view on NTPC? NTPC. NTPC seems strong to around 385 390 levels. ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी एट अराउंड 360.
So view on UCO Bank. UCO Bank, PSU Bank, last year का one of the best performer. लास्ट ईयर काफी अच्छे रिटर्न्स दिए इसने, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ. एंड ये साल का मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत. ठीक है, इफ यू वांट टू एंटर फ्रेश, अच्छा रेंज है. 55 है करंटली, ऊपर की साइड पे 60, नीचे की साइड पे 50 का स्टॉप लॉस या सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं. 1:1 ट्रेड बनेगा. ₹5 ऑन दी अपर साइड, ₹5 ऑन दी डाउन साइड. View on Sea Coast. View on what? Sea Coast. देखिए अच्छा लग रहा है. ऊपर की साइड में 6.5 तक, 6.5 अगर क्रॉस करता है, सो वील बी सीइंग प्रेशर लेवल्स इन दिस. करेक्ट, 6.5 तक. एंड नीचे की साइड पे सपोर्ट बना के चलिए इसका 5.10, 5.20 का. So can we buy Suzlon for long term? Dev sir, can you hear me? Sorry, I could not hear you. Can you just repeat? Suzlon for long term. So Suzlon. हाँ Anuj, I could not hear you. Can you just repeat? So Suzlon for long term. Dev sir, can you hear me? Suzlon for long term. Yes. Suzlon very strong. So आज हमने इसमें बाय भी इनिशिएट किया था मॉर्निंग में. सो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लुकिंग एट द नंबर्स, इट सीम्स स्ट्रांग. बाकी मैं टेक्निकली भी बता देता हूं. वंस द चार्ट ओपन्स, आई एम फेसिंग फ्यू टेक्निकल डिफिकल्टीज. Yes sir, you are audible. Okay, so Suzlon का chart, I'm not able to show it to you, but I can see it on my screen. ऊपर की साइड पे 60 फ्रेशर लेवल्स लग रहा है, और नीचे की साइड पे सपोर्ट इसका 55 का लेके चलिए. Got it, sir. Thanks for the morning session. We have given the market update, market levels. हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है. Guys, also ensure कि आप प्रॉफिट्स बुक करें जैसे जैसे आपको मौका मिले. And see you at 2:30 p.m. for our FinNifty expiry. And yes, we have a session tomorrow at 4 p.m. with Chandan Tabaria, sir. So that will be all, guys. Thanks a lot for joining in. See you at 2:30 p.m. Thank you, Dev, sir. Thank you.